Good morning students, BSc first year English medium. I welcome all the students in my class. Myself Jyoti, assistant professor in Zoology department, Sri Adina Jain PG College. We are doing the Zoology paper 3rd and name of this paper is the Development Biology, and in this book we are doing the process of spermatogenesis. ठीक है, so our topic is the spermatogenesis, and in this today class we will study the structure of sperm. It means in our last video we have done all the process, all the phases of the spermatogenesis. So this is the last topic of this चैप्टर. ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की. तो हमने क्या देखी? स्पर्म की स्ट्रक्चर देखी थी, किस किस का फॉर्मेशन होता है. सो देयर हैज अ स्पर्म इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द हेड, नेक्स्ट वन इज द मिडिल पिन एंड लास्ट वन इज द टेल. सो 3 पोर्शंस आर देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. सो राइट डाउन द हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. हेडिंग डालेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. ठीक है, हेडिंग क्या है हमारी? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. लिखेंगे इसमें अ मैच्योर स्पर्म इज अ मोटाइल haploid structure, motile haploid structure. A typical sperm consists of head, middle piece and tail. A typical sperm consists of head, middle piece and tail. फर्स्ट लिखेंगे हेड. हेडिंग डालेंगे हेड. द एंटीरियर apical part of sperm is the head, which consists nucleus and acrosome. The apical part of sperm is the head, which consists nucleus and acrosome. Head anterior tip is the acrosome, which is a cap-like
which is a cap like structure over the nucleus, which is a cap like structure over the nucleus. It contain lytic enzyme S protease, acid hydrolase, hyaluronidase, acrosomine, etc. Behind the acrosome, a large nucleus is there. A large nucleus is present. Which form most part of sperm head. Which form most part of the sperm head. It contain dense chromatin material, which responsible for transmission of hereditary character hereditary characters from the male parent.
नेक्स्ट लिखो मिडिल पीस, इसी में नेक्स्ट आगे लिखेंगे जस्ट बिहाइंड द न्यूक्लियस, हेडिंग क्या है, मिडिल पीस, just behind nucleus middle part of sperm is present, sperm is there, sperm is there, it forms the base of the flagellum and contain both proximal and distal centriole, proximal and distal centriole, which are at right angle to each other, which are right angle to each other. The mitochondria also surround the axial filament in mid-piece region, लास्ट लिखो टेल, एक मिनट इसी में लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड in coiled spiral arrangement,
spiral arrangement in mammals and known as Nebenkern. अंडरलाइन कर लेना, मैमल्स में जो इनकी स्पाइरल अरेंजमेंट होती है अराउंड द एक्साइल फिलामेंट, दिस स्पाइरल अरेंजमेंट इज नोन एज द नेबेनकर्न. लास्ट लिखो टेल. लास्ट लिखेंगे टेल द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म is the tail, which contain axial filament. The longest part of sperm is the tail, which contain axial filament. The structure of axial filament, the structure of axial filament, is similar to the cilia, that has 9+2 स्ट्रक्चर. ठीक है, फ्लैजिला या सीलिया में कैसी होती है? देयर हैज अ 9+2 स्ट्रक्चर, 9 पेरिफेरियल एंड 2 सेंट्रल फिलामेंट्स आर आइदर फाइबर्स आर देयर. This tail assists the movement of sperm. ठीक है, so now your chapter has completed. Now on this topic there your chapter has completed. Write down this, then we will draw the diagram of sperm. ठीक है, फिर हम क्या बनाएंगे? द डायग्राम ऑफ स्पर्म डायग्राम बनाएंगे. नोट डाउन करो यहाँ तक.
Draw this diagram.
ठीक है. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. This is the acrosome, nucleus, manchate, plasma membrane, proximal centriole, distal centriole, mitochondrial spiral, this is a ring centriole, and this is a axial filament. This is the axial filament. So this is the structure of a sperm. If we are talking about, this is the head of a sperm. This is the middle piece, and this is tail. ठीक है. Now your chapter has completed. Note down this diagram, and in the next video we will start the oogenesis process. When we will completed the oogenesis, then we will study the again these topic in a फ्लो चार्ट. कि फ्लो चार्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, oogenesis और spermatogenesis को अगेन एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे ये प्रोसेस हमको डिटेल में लर्न हो जाए. ठीक है. तो आप इसका डायग्राम बनाएं, and in our next video we will started our new topic, that is the oogenesis. It means the formation of female gametes.